medicine is all evidence based. बिना एविडेंस के कोई भी हम हाथ नहीं लगाता आजकल बिकॉज एक तो कंज्यूमर एक्ट हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग so we are all very scared अगर कोई वो contest करता है कि नहीं ये मेरे को ये नहीं है at least you have an evidence. So pathology, radiology, diagnostics has got a very important role in medicine now. They want that we should be that evidence of a report, and a correct report is that's why very mandatory for a correct treatment. You all agree that we all need that. And mind you, all of us, I'm sure, has faced whenever a diagnosis is required, we look for the best lab. And I think Dr. Lalpath Labs, all of you all know, you all trust Dr. Lalpath Labs. So why do we go to the best lab? Because we know we don't want to waste time trying to have, कि treatment हमारा एक ही बार में सही treatment, है ना? So what is most important when we are in pathology? कि correct sample लिया जाए. अगर sample right है तो आपकी report भी right होगी. And so very important is the first thing is phlebotomy. So today what I'm trying to tell you is correct way of phlebotomy. And since you in your portfolio you have a few rapid diagnostic tests, we will just go through that diagnostic test. So here we start off. What is phlebotomy? Phlebo is a Greek word. Okay, so phlebo meaning blood vessel, and tomy means to make an incision. So it's the process of making an incision in a vein. इसको हम बोलते हैं veni puncture. You can also have an arterial puncture. जब ABG करना पड़ता है, that time you do the arterial puncture. But mostly it is the vein which we puncture. We don't go into arterial because that is where the heart is also pumping. So if you puncture that, you can have, gush of blood out. Because along with the pump, the gush will go out. So here we look at is a vein. And that is why it's called veni puncture. So this phlebotomy is the most important thing, and any report, let me tell you, we always believe in that. If the sample is collected right, your 100%, 100 and 200% your report will be right. If there is a problem with the sample, your reports will be affected. So this is a gospel truth which is there in our pathology. आप जैसा sample दोगे, आपको report वैसे मिलेगी. कई लोग ये बोलते हैं हमारी रिपोर्ट इस लैब से गलत आई उस लैब से गलत आई. प्रॉब्लम रिपोर्ट की नहीं है because they are all NABL labs, they are all accredited labs, they all run controls and they are all automation. But why is the reports variation? Because the sample collected was not right. So now while I come to the process, these are the kind of tests which have been assigned, which can be done at the AYUSH HWCs. One are the rapid tests: malaria, typhoid, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis E. Urine test has two tests. One is urine albumin and sugar, and pregnancy test. Both are done in urine. Then hemoglobin using digital hemoglobinometer, blood glucose using glucometer, and water testing for bacterial contamination. Agreed, all of you? Now this is the menu which has been given to all the AYUSH HWCs. Coming to the first thing that we do when we take a sample. चाहे आप urine sample लो, blood sample लो, tissue sample लो. सबसे पहले हमको क्या चाहिए? Identification of the patient. आपका सैंपल कहीं और ले रहा है एंड ट्रैवल करता है किस बॉक्सेस में एंड कहीं और जाता है, पर उसकी एक आइडेंटिटी कैसे होती है? वी हैव टू बी श्योर दैट माय सैंपल हैज माय नेम. एंड नाउ दे कैन बी टू डॉक्टर नीलम्स, दे कैन बी टू नीलम्स. व्हाट इज द थिंग? देन आई लुक फॉर एन एज. देयर शुड बी टू आइडेंटिफायर्स ऑन दैट ट्यूब. इट कैन बी योर मोबाइल नंबर, इट कैन बी योर एज. It can be these two. Mainly we take this as for NABL.
we take these two identifiers so that there's बहुत rare chances है कि एक ही patient के दो नाम, age, phone number एक ही हो. So what happens is confirm the patient's identity. What happens is also now, I may say I'm needle, but when I go to give a sample, somebody else goes in my place. So when a patient comes into you, I'm sure when you write a prescription, आप यही पूछते हो आपका नाम क्या है. So सबसे पहले identify the patient that you're taking the sample. It may be small children coming, 2, 3 of them, and all 3 of them have a test, and you have identified the wrong sample to the wrong patient. So then check the pre-test requirements. Does it need fasting, like a sugar? Does it need midstream urine? Just generally, this is not included, but like a urine culture. Generally, we say give a midstream urine, so that the first flush of bacteria goes on and the midstream is coming for culture. Uh, Suppose you're doing a test for cholesterol or a lipid profile, you need a 24 hours. Cholesterol will not change, but triglyceride changes by the food that you eat. So if you're not 24 hours, suddenly your cholesterol and HDL, everything is going wrong. So fasting sample, telling the patient correct time when I should take samples. And there are some tests which have got very specific tests times, like say PTH. You need to take between a time when there is a peak. There's a cortisol level. There's a diurnal up and down. There's a morning peak and an evening peak. So generally we take, so whenever there is a requirement of a test, ask specifically what is the pre-requirement. Say, I go for a sugar test. I'm not fasting. Make sure you say it is I'm not fasting, it's a random sugar. The interpretation of that test, before you label him as diabetic, it becomes as that you're telling him what time the sample was taken. So the prerequisites to a test is very important. Then, of course, now we are very required to make sure waste segregation happens. I have just come from Ranikhet. I've been visiting those areas. Everywhere there is waste segregation, which is very nice. The bins are there, the red, yellow, green bins are there. And I think everybody has been trained onto this. So segregation of waste, why? Because they are infective. When you put them in the society, what happens is you are infecting. You are also part of that society, which will come back to you. So make sure that you sterilize and you throw your infective material in a proper channel. Of course, then you perform the test once the sample is collected. Report that also please check twice. You may say, sometimes we say we have seen a positive, but we've given out a negative result. And why? Because it's a transcription error. It's just a matter like, say, a sugar which was 100 and you written 180 by mistake. So the patient gets unnecessarily labeled as diabetic while he was not. Then bench cleaning and hypochlorite, this is for our own safety. We do hypochlorite because before they are working on any, even when you are touching patients, I think COVID has taught us that. To clean, wear gloves, and that's one thing which we have understood as doctors, that we have to have first our safety. We have to make sure that we are safe before we can treat the patient. Now, we have the common collection tubes. All of you are aware of the collection tubes? How many of you have ever collected samples? None of you? So what happens is there are different color tubes. And even if you have seen your needles, injection needles, they are different colors. There is a meaning of that color. And if you look at the needle, it will have a gauge. The higher the number of the gauge, the finer the needle. अगर 24 है वो needle fine है, अगर 20 gauge का needle है तो वो it is thicker. You will not give an IM injection with that. So the gauge goes differently. So everything is color coded in our system for the ease of us. Even if we can't read, we know from distance we can just pick up quickly the color. In the same way, in pathology, we have a color coding. And why do we have a color coding? Each tube is required, different sample is required for different tests. So if it is a red tube,
a lavender tube, a light gray. These are few of them. Besides for specialized tests, you have heparin, which is green. There are different tests required. Lead-free tubes also for leads for metallurgy. So a red tube, which is the plain tube. You just don't do anything with this. Sample ले लो और आप इसको थोड़ी देर रखोगे तो sample segregate हो जाएगा. Along with this red tube, we have an SST tube. This is the barrier tube which is got a gel. अगर आप लोगों ने notice किया होगा, yellow color का होता है, gel आती है उसमें. Gel fastens the process of clotting. So this is the red tube. Red tube में हम जब sample लेते हैं या SST में लेते हैं, तो serum निकलता है. I'm sure all of you know. If you don't know, I just also stress on what serum and plasma is. Then we have the lavender tube EDTA. This is an anticoagulant which we use, and this tube we use for hemoglobin, CBC, is that clear? CBC, CBC, HbA1c. These are the tests, the blood grouping. These are the tests where the sample does not segregate. We don't need the plasma, but except for in blood group where we do forward and reverse sampling of blood group, in that we take out the plasma, otherwise the whole blood is required. Now, the problem with this sample is within 24 hours, the blood cells, they can be only maintained for 24 hours. अगर उसके बाद आप sample करते हो, तो आपके hemoglobin में, platelets में, they have a problem in that. Then we have. Ma'am, please repeat for red tube. Okay. In which cases these are recommended? Wherever a serum is required. Serum. I'll just come forward. आगे मैं आपको और बताऊंगी. So ये lavender tube हो गया EDTA के लिए जिसमें whole blood चाहिए. Then light gray tube है fluoride. Fluoride is specifically for sugar. इसमें आपका शुगर 48 to 72 आवर्स मेंटेन होता है. तो अगर आपने एक दिन सैंपल दिया 3 दिन बाद फिर आपकी वैल्यू बहुत माइल्ड चेंज होती है, बट ये रिटेन होता है. तो दैट्स व्हाई शुगर आप कभी एसएसटी रेड ट्यूब में नहीं देंगे, आप या लैवेंडर ट्यूब में नहीं देंगे, आप फ्लोराइड में देंगे. Then the other containers we have is the urine sputum, stool के लिए एक स्पून आ जाता है. बाकी यूरिन आता है. If you go to BD का एक थोड़ा सा कंटेनर टाइप आता है for collecting samples or urine samples. Sputum can also be put into this tube because these are sterile. Now, if you look at just the syringe part of it, mostly what has happened, we are these days using vacutainers. I don't think you're all aware of that. The moment a one prick is given, all you need to do is change the tubes. That needs a little expertise. So mostly I think we are using is syringes. That's the easiest to find it. So the syringe has got 3 components, which all of us know. One is the bevel, the needle shaft, the hub, tip, and the plunger. Now that's what I mentioned. The gauge number is this indicates the bore size. Okay. आप IM इंजेक्शन जो लगाओगे आप 20 वाले से नहीं लगाओगे, आप 24 से लगाओ. आपकी इंसुलिन नीडल होगी वो छोटी होगी, लेंथ भी छोटी होगी और बहुत फाइन होती है. That will be even more like 28, 32. Any questions on this? Now, tourniquet. What is the first prerequisite when we take a sample? Is tie a tourniquet. Now, tourniquet is of course tied here, all of us know, and don't do it more than a minute. Because what happens is stasis of blood. Stasis means blood रुका आपका platelets पे affect होगा, आपका हेमो concentration हो जाएगा. So we don't do more than a minute. अगर एक बार try किया नहीं आया sample, खोल लो उसको, दोबारा लगा लो. But don't keep we are trying 2 plunges, 3 plunges कर रहे हैं. It leads to erroneous results. Okay, and of course we all know हम क्यों tourniquet लगाते हैं. We're doing tourniquets for just to make the vein palpable. आप एक तरफ constrict करके उसको vein को palpable बनाते हैं.
disinfection. Now there is a very specific way that we use the spirit swab. हम लोग क्या करते हैं ऊपर से नीचे डालते हैं. Just remember that means you're taking the infection ऊपर से नीचे in your hand. That is not the way. The way that the vein or the site is cleaned is round. Take it from in out, so that the where you're going to put the prick, that is disinfected. You're not taking the skin infection back into the area where you need to put the prick. So now when you go and ever give a sample, remember to ask that fellow how he's doing. Okay, कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? So this is one major training that we do. And let the alcohol dry. नहीं तो वो क्या होता है सिर्फ पंचर करोगे अगर ड्राई नहीं है तो वो स्पिरिट अंदर जाके जलेगा. And never blow on the side. आजकल after COVID we are not even blowing candles on a birthday. So please don't blow on those. Now positioning the sample patient. आप लोग जब sample देने जाते हो you always look या तो आप लेटे हो generally when you are going to give phlebotomy you are sitting comfortably. Extend your arm. Have a table where you put your hand onto it. It's good for to see the vein. It's also good for the phlebotomist when he sees that I'm comfortably able to approach the vein. So of course this is and this is antecubital region. So this is where we are the best samples are taken from the antecubital region. The others are of course the back of the arm if we can't find them. These are the venipuncture cells, and I think all of you know, remember, if you remember a little bit of your anatomy, you have, this is the median cubital. This is the triangle from where we find the vein. Mostly यहाँ से vein आ जाता है, and good flow आ जाता है. So generally we approach this, the median cubital vein. And then in case not, the dorsum of the hand. एंड अगर आपका एक डॉसम में जनरली क्या होता है हम नीडल और सिरिंज लेके नहीं जाते. स्कैल्प पेन देखा है आप लोग ने? इट्स द इजीएस्ट टू डू. इट्स अ बटरफ्लाई वेन. यू पुट इट इन एंड द ट्यूब में आराम से आ जाता है. जनरली बच्चों में इट्स वेरी इजी टू डू दैट. सो दैट दीज आर द अदर वेज ऑफ एक्सपर्टीज वेयर यू कैन टेक सैंपल्स. Any questions to this? I think these are basic which are less than our positions. Many times these positions we can't count veins. In that scenario, what we should do? No, see what will happen. You'll have both bilateral veins. If the bilateral veins are not there, then you know what happens is generally you need an expertise to do it from here. If not, then there is another way which is the inguinal. Yeah. So generally that needs expertise. Carotid you will not touch. It is the artery. Don't touch the carotid because see, the carotid is totally connected to it. Only in an ICU that's the time when the sister will take it, where you can control it. But on a normal procedure, you don't touch the carotid. In case we are not finding any vein in the upper lips, and suppose we go to this popliteal vein, etc. Yeah, this. उससे ना, see, as you going distally, the flow is not much. फिर volume निकलता नहीं है. Generally, when it is in a patient is in the ICU, comatose, बहुत ही dehydrated है, yes, we look for those veins. But generally हम जब phlebotomy के लिए जाते हैं, वो नहीं करते. But ये फिर deeper vein मिल जाता है. आजकल एक scanner आता है, और वो scanner क्या होता है? जैसे आप उसके ऊपर UV light डालोगे, तो आपको veins दिख जाएंगे. स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. सो या तो वो एक हैंड हेड आता है या स्कैन इसमें आता है एक स्टैंडिंग. सो दैट इज आल्सो वन. बट मेनली यू हैव टू डिपेंड ऑन पैल्पेशन. आपके फिंगर टिप से जब आप इसको करोगे, यू देयर इज अ वे, पुट योर थंब इनसाइड एंड मेक द वेन प्रोमिनेंट. Okay, you tied it up, make him do, your vein will come prominent. If you can't see it, because some people don't have a little deeper, feel it, it will roll. It's just practice that, yes, and some cases nahi hota. Ma'am, can we puncture any vein with some varicose veins in it? Any varicose veins? Can we directly puncture in that? Varicose veins से आएगा नहीं. एक तो varicose केस में valves होती हैं, जो ये veins आती है ना हमारे, because क्या होता है कि
बैकवर्ड प्रेशर जाता है, तो उसमें वेन्स में नहीं आएंगे आपके सैंपल. There will be one of them at the lower limb, but not the varicose veins. उससे नहीं आएगा. आपको बहुत mm आएगा. मैम valves तो सारी veins में ही होते हैं. But if you look at this vein, these are artificial veins which are very fine. These are not meant for the main. They are the ones which have got enlarged. They can be also thrombosed. Okay. So you will not get that vein. You will not get that flow which you need. That's why this is connected to the main. You will immediately get good flow. You will have to fill up at least say 8 ml. How will you get 8 ml from there? Because that is thrombosed veins. If you look at these varicose veins, they are thrombosed. Thrombosed means the walls have got thrombosis in that, long standing. My other thing is that sometimes cut open operation is needed to. Yes, yeah, so that we will not do it. In case, see, there's a collapse patient. He's had a hypovolemic, say, road accident cases. What happens in road accident and he's bled? All his veins are collapsed. Yes, then that. And how we find out the moral vein to get Palpation. palpation? Palpation. That is also expertise. Palpation. If I tell you that this is how it will not, it is an expertise to find out that. Okay, so that is it. This I am not going through. What happens is when you have tied the tunicate, just before the last vacuum cleaner has to be filled, release it. So that when you remove the needle, it's not pumping out the blood. And then you are putting the bandage, leave it, ask the patient to keep the bandage for half an hour and remove it himself. Or if you feel a patient is on any medication, where is a blood thinner. A blood thinner, you all have where you're doing PT, ABTTs, all these cases. In that case, make sure if you have the history to make sure the patient presses it for a long time. Once what happens, आपने अपने needle निकाला, ask the patient to use his thumb and press it. आपको press नहीं करना है. एक उसको you give him a cotton swab and tell him to keep pressing it for half an hour. Once he removes that and you see no blood coming out, that's the time put a bandage. You will have to each patient के साथ हमको ये देखना पड़ेगा how long you do. Don't blindly just say कि ये लो लगाओ बाहर निकल जाओ. Make the patient sit for some time, at least 15 minutes, so that you know he's not going to bleed. There are cases where bandage डाला and the patient has bled. Okay, so now once the sample is taken, and where I had mentioned this in these vacutainers to you, we need to mix the sample. Now what happens is sometimes you will go and tell the patient कि patient आया बोला मेरा hemoglobin 6 grams दिख रहा है, and इतना तो मेरा कम ही नहीं था. या एक केस आया जैसे platelet बोल रहे हो कि बिल्कुल platelet ही नहीं है. Why? And मेरा तो I'm a healthy patient. I can manually see that when I physically see the patient, I say इसका hemoglobin 11 होगा, but उसकी report अगर 6 आई. Where is the problem? It was in the sample. What happens is when we take sample in this lavender tube, the EDTA, and we have not mixed with the anticoagulant, it clots. These little clots is going to give you a wrong report. So always remember when you are giving sample, please notice it, that the patient, that the phlebotomist is tossing it at least 5 times. It's not like this. Mostly they pick up and do this. You're doing hemolysis of the you're breaking the RBCs. ये वाला नहीं काम करता. It's just a gentle inversion which is required. And once this inversion is done, because even when we put this sample onto a machine, that time also we are mixing that sample. Because इसमें एक है plasma and serum. Next few slides I'll tell you what it is. So this is why we mix the samples. While in a red tube, you make it stand. उसमें हमको mix नहीं करना है. आप उसको रखो, 10 मिनट रखो. एक SST ट्यूब आती है जिसमें जेल आता है, उसको भी आप रखो. I'm not saying to mix that. Why? Because we need a separation of red blood cells
WBCs and platelets, and the serum septum. Coming to post-phlebotomy, like I said, put a firm pressure. The best pressure is patient's own thumb. Small children, yes, we will do it. But for others, they can do it right there. Like I mentioned, to hold the patient pressure for 3 minutes, time to invert the tubes, and re-inspect the culture site. Please make, आप अपने जो भी टेक्नीशियंस उनको जरूर बोलना कि पेशेंट्स को रोक के रखें, and especially elderly patients who may be on blood thinners, and then the blood doesn't clot immediately. This is what I told you about inversion. It's the purple top. 5 inversions definitely required. There are some videos which I'll be running, and this is something that we had done. How phlebotomy is done. We had done this video. We shot this video live. This is how our patients sample. Phlebotomy या वेनिकल्चर बहुत पुरानी टेक्निक है और समय के साथ और बेहतर हुई है। Appropriate and correct treatment and medication के लिए एक accurate lab report का होना अति आवश्यक है, जो कि correct phlebotomy से ही संभव है। आज हम phlebotomy procedure को step by step समझेंगे। मैडम सचिन एज मेरी 30 हाँ नहीं कुछ नहीं हाँ मैंने कुछ सुबह एक दवाई ली क्लीन डिनर मैंने कोई 10 से 11 नहीं पेशेंट के आते ही आप उन्हें ग्रीट करें, उनसे नाम, एज पूछिए। ये प्रोसेस आपको वेरीफाई करेगा कि पेशेंट जिसका आप सैंपल लेने वाले हैं और जिनका लैब फॉर्म आपके पास है वो सेम है या नहीं। साथ ही पेशेंट से प्री टेस्ट इंफॉर्मेशन जैसे कि उनकी फास्टिंग कंडीशन या टेस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी। मैन विजिट बारकोड डॉक्टर लाल लैब का यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। इस बारकोड की मदद से पेशेंट के सैंपल की ट्रैकिंग आसानी से की जा सकती है। ट्यूब पर बारकोड लगाते समय 2 चीजों का ध्यान रखें। ट्यूब पर लगा काला निशान कवर ना हो। सैंपल को विजुअली चेक करने के लिए बारकोड और ट्यूब स्टिकर के बीच में जगह जरूर रखें। इसे लेबल डालना आपकी ट्यूब पर। सर आपको मेरे तरफ से एलर्जी तो नहीं है? नहीं छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा चुभन होगा, लेकिन ज्यादा पेन नहीं होगा। इसे सील पैक होते हैं, इसको बोलते हैं।
साइट आइडेंटिफाई करते ही सबसे पहले साइट को अल्कोहल स्वैब की मदद से अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करें। साइट को ड्राई होने के लिए कुछ सेकंड तक वेट करें। थंब से वेन होल्ड करते हुए वेन और मिडल टिप के बीच में 15 से 30 डिग्री का एंगल बनाएं। मिडिल का बबल पार्ट ऊपर की तरफ रखें। वेन पंक्चर स्मूथली करने के लिए ट्यूब को मिडिल होल्डर में जेंटली पुश करें। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का ध्यान रखते हुए सभी ट्यूब्स को काले निशान पर फिल करें। ट्यूब का इन्वर्जन एज पर गाइडलाइन करें। टॉनिक को 1 मिनट से ज्यादा देर तक ना बांधें। मिडिल को विड्रॉ करें। पेपर वेस्ट को ब्लैक बैग वाले डस्टबिन में, यूज कॉटन और अल्कोहल वाइप्स को येलो बैग में, ग्लास और प्लास्टिक को रेड बैग वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करें। Any questions to this? Just for like I mentioned, I've been just told by Dr. Pandit, sorry. Actually, sometimes finding gain in old age patients is Yeah. a very difficult task. Many doctors are done. So, what we can do in such cases? You just have to try all the veins which is possible. So, old age में ये वाली veins मिल जाती हैं. आप ये देखोगे कि because the muscle mass goes off, तो आपकी ना vein prominent हो जाती है यहाँ पे. ओल्ड एज स्मोकर्स डायबिटिक इन सब में बड़ी प्रॉब्लम हाँ, ओल्ड एज में स्पेशली आपकी फैट्स कम हो जाती है तो ये वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है. एंड यूज अ स्कैल्प वेन. स्कैल्प वेन में क्या होता है कि वो आप एक तो डालोगे और ट्यूब से आ जाता है. सो इवन इफ इट्स अ फाइन नीड वेन, उसमें वो चला जाता है. सो दैट इज द ओनली वे यू हैव टू ट्राई ऑल दिस. इसमें सो दिस इज वेयर आई हैव बीन टोल्ड बाय डॉक्टर पांडे दैट मोस्टली ऑल आर डूइंग सॉरी तीन चार कलर की तीन चार कलर की ट्यूब थी. आपने जो पहले बताया था कि रेड कलर ट्यूब होगा और लेवेंडर होगा और लाइट ग्रे होगा, उसमें सब नए नए कलर थे. हाँ. तो क्या वो किस टेस्ट में यूज करते हैं और क्या सभी को मिक्स करना है? क्योंकि अगर रेड वाला होगा तो उसको तो छूना भी नहीं, हिलाना भी नहीं है. I'll tell you why I showed you only the colors जो आपके काम के आपके टेस्ट है. आपके जो टेस्ट होंगे ना आप वो करेंगे ना. पॉपुलेशन वाली जो स्टडीज होती है उसमें ब्लू कलर की ट्यूब होती है. So you're not doing any population studies. You're because specifically this whole presentation is made of the tests that are being done at your location. और उसमें आपको ये ग्रीन चाहिए नहीं, आपको येलो ब्लू नहीं चाहिए. So that's why नहीं लिखा है.
बट देयर इज एन ऑर्डर ऑफ ब्रॉथ। सपोज कल्चर करना है किसी पेशेंट का, सबसे पहले कल्चर के लिए ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेते हैं। क्यों? वी डोंट वांट दैट सैंपल टू गेट इन्फेक्टेड, बिकॉज ब्लड कल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है in a very serious patient, blood culture is the first. So सबसे पहले एक्चुअली सैंपल ब्लड कल्चर का लेते हैं। So वो आप लोग नहीं लेंगे, and most like Dr. Pandey just told me कि most of you all are doing is fingerprint test, you all are taking samples. Max आपके पास मैंने जहाँ पे देखे हैं most of these primary health care they are the red tops, आपके पास SST tubes भी नहीं है, red tops रहते हैं। So these are the ones where you need to clot the sample. You don't need to do anything in that. उसके जो tubes हैं उसके साइड में clotters होते हैं, so they activate the clotting process. So one is this. I'll just move forward. Now, just like I was telling you, let's come to this components of blood. Why we take different tubes and what? So अगर आप ये देखोगे कि एक blood whole blood है, whole blood हमने use किया wherever CBC is required, hemoglobin is required, platelet is required. Dengue is coming in, you will need platelets, and that is all in whole blood. Mostly your anemic cases से antenatal cases. Pregnant lady आप hemoglobin देखोगे उसका main. अगर उसमें से hemoglobin देखा, आपने ये भी देखा कि what kind of an anemia is that patient got. आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारी हेमेटोलॉजी की, उसमें सारे इंडाइसेस होते हैं एंड यू हैव टू रीड द ग्राफ, रीड दोस इंडाइसेस, और वहीं से पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो थैलेसीमिया है, बिकॉज देयर आर दोस इंडाइसेस व्हिच टेल यू एवरीथिंग नाउ. So before you make a slide, before you are doing iron studies, you will be able to see that. So that is the advantage today of technology. So now what happens is when we take the whole blood, EDTA, don't touch, inverted hemoglobin, your hemoglobin, whether you have infection or not, TLC, DLC, everything comes out with that. Platelets. Then we have as to why. Now, there is a plasma, there is a serum, and there is a whole blood. Three things. Okay, whole blood समझ में आ गया कि this is whole blood. Now what happens is when is the plasma taken? Plasma and serum में क्या फर्क है? एंटीकोगुलेंट के साथ जो रहेगा वो रहेगा सीरम, नहीं, वो प्लाज्मा प्लाज्मा जो अगर जैसे फ्लोराइड में लिया जिसमें हम लोग ग्लूकोज कर रहे हैं, आई टोल्ड यू दैट ग्रे कलर वन, उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं वो क्लॉट नहीं होता, पर जो सेपरेट होता है जो आरबीसी वाला पोर्शन है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, वो नीचे आ जाता है, और जो हाँ बिना क्लॉटिंग के जो आएगा वो प्लाज्मा है, और जो क्लॉट के बाद निकलता है वो सीरम है. तो अगर आप फ्लोराइड की ट्यूब जिसमें शुगर कर रहे हैं उसको वापस मिक्स करेंगे वो मिक्स हो जाएगा. Okay, so this is the difference. Now, what is the difference in the components? The components is that in serum, it's a clear fluid, and all the coagulation factors are also removed. Plasma में coagulation factors रहते हैं, but serum में नहीं रहते. हमारे जितनी biochemistry test है, they've all been standardized to serum, not to plasma. Because plasma will interfere with certain of the parameters. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज में करते हैं. I hope all of you all have centrifuges in your place, small centrifuges. So we have a centrifuge which is required, and centrifuge का भी एक speed होता है और time होता है, जिसमें वो because the validation studies that have been done, and they know that आप इसको 15 minutes 3000 RPM पर डालेंगे तो आपका सीरम अच्छा है, separate होके आएगा. There will be no interference. Now what happens is if you don't centrifuge the sample very well in serum, fibrin आ जाता है, और वो fibrin जो है, they are strands. Fibrin क्या है? Strands है. Fibrin is taken for what? Clotting. In the blood, fibrin होता है वो clotting के लिए यूज होता है. जैसे हमारी bleeding हो रही है, fibrin is activated to stop the bleeding. So what happens is when we are not partial centrifugation करते हैं, fibrin
थ्रेड्स बन जाते हैं इन द सैंपल, और वो जाके हमारी मशीन्स में क्या होता है, अटक जाता है। Since you all are not doing on automated machines, and then what happens, the needle block हो गई, sample partial slip हो, erroneous results आने की डर है। So we say that, centrifuge properly so that the results are right. I have a clear seal. So this is where these three factors are there. मैम मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा उल्टा समझ गया हूँ। आप प्लाज्मा और सीरम में? नहीं, प्लाज्मा और सीरम में नहीं। जैसे आपने बताया कि अगर हमको कोई स्टडी करनी है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, इस पिक्चर में जो ऊपर वाली पिक्चर में विद एंटीकोगुलेंट वाला पार्ट है और जो आरबीसी रेड कलर की दिख रही है, दैट इज पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड दैट इज I tell you what, this is whole blood. Okay, whole blood. उससे ऊपर विद एंटीकोगुलेंट में अगर आप इसको रखोगे ना, अगर कुछ नहीं कर आप रखोगे तो या तो ये तीन पार्ट में आता है। आरबीसी आप सेंट्रीफ्यूज में करो, सेंट्रीफ्यूज इधर हो रहा है। अच्छा, उधर हो रहा है। हाँ, ये जो है कि आरबीसी दे आर बल्क, नीचे तो और एंड दे हेवियर, सो दे विल सेटल डाउन। एंड दिस इज कॉल्ड पीसीबी। हाँ, दिस इज कॉल्ड पीसीबी। पीसीबी और ये डब्ल्यूसी, हाँ, और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है वो एक लेयर इधर बनाता है, ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। ओके, एंड दीस आर अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर साइज। यही तो हम लोग पीसीबी, एमसीएच, एमसीएससी वगैरह में चेक करते हैं। हाँ, तो हमको ऊपर वाला जो विद एंटीकोगुलेंट वाला लेना चाहिए ना। सी आपने नहीं, हाँ बिना विद एंटीकोगुलेंट। पर ये हम मैन्युअली तो नहीं करते ना, ट्यूब को ऐसे नहीं देख के बोलते हैं। कभी हम देखते हैं जब ट्यूब है हमारे हाथ में, तो हम देखते हैं कि अच्छा इसका हेमोग्लोबिन अच्छा है, रेड है, ओके ना, या तो अगर उसका हेमोग्लोबिन 6 है ना, तो उसका पानी कैसे होगा। Your visual eyes can also figure out what is the hemoglobin, but this is required to put in my machine. Okay, I cannot put separate these things. The machine all the automated machine segregates this and gives you values. ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अभी पैथोलॉजी में, तो उसमें ये पढ़ा है कि जैसे आपने ये दे दिया ऊपर वाला विद एंटीकोगुलेंट वाला, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं जनरली। नहीं, विद एंटीकोगुलेंट को नहीं करते, जो एंटीकोगुलेंट के साथ एक ही ट्यूब को करते हैं। के बारे में पढ़े हुए नहीं, एक ही ट्यूब को करते हैं, फ्लोराइड ट्यूब। अच्छा, जिसमें शुगर करना है, उस एंटीकोगुलेंट को जो ग्रे टॉप है उसको आप स्पिन करके उसका प्लाज्मा में टेस्ट करते हैं शुगर का। तो मतलब हमको नीचे वाला रिकमेंड कर रहे हैं, ये है सीरम। हाँ, विदाउट एंटीकोगुलेंट वाला रिकमेंड, विदाउट एंटीकोगुलेंट। लेकिन इसमें जो पीसीबी की वैल्यू आएगी नॉर्मली जो 45% रहती है मोटा, ठीक है, 45% पीसीबी जो आपका आरबीसी नीचे से ढलना हो गया एंड 55% करेक्ट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मुझे लग रहा है कि ये क्या कहते हैं, कम लग रही है। ये अभी आप this is a diagram. Okay. You are looking at that. This is simulation that this is the components. Don't go by this that this is an exact picture. This is just the thing that ये RBC है, ये WBC, ये components की तरफ से देखो. Don't look at it from point of view of this, but what you are saying is get this correct that जब coagulant डालोगे, आपके ब्लड में ये तीन चीजें होती हैं। कोगुलेंट में ये बना रहेगा, जब हम उसको एंटीकोगुलेंट और के बिना डालोगे तो ब्लड आपका यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, और ये जो निकलेगा इसको हम सीरम बोलते हैं। और यहाँ जो हमने बिल्कुल इसको अलग नहीं किया है, कोगुलेंट डाला हुआ है, तो वो प्लाज्मा बना है। Is that clear for everyone? मैं ऊपर एक इसके आरबीसी के ऊपर टीके की लेयर पतली है जिसमें डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है, वो दबा रही है जो फिर एंटीकोगुलेंट आप यूज कर रहे हैं। नहीं, आप एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? अगर आपने एंटी मतलब मेरे को क्लॉट नहीं होने देना, नहीं होना ना। हाँ, अब मैं इस ट्यूब को अगर हिलाऊंगी तो सब मिक्स हो जाएगा। ओके, इस ट्यूब को मैं अगर हिलाऊंगी तो मिक्स नहीं होगा क्योंकि ये क्लॉट बन गया। और ये जो सैंपल है, that is my sample which I am using for hemoglobin, hemogram, CBC, platelets. अच्छा, CBC HbA1c विद एंटीकोगुलेंट आपको CBC के लिए एंटीकोगुलेंट वही तो मैं बोल रहा हूँ।
हाँ तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो, आप यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इनटू दीस थ्री कंपोनेंट्स। वही पिक्चर आ रही है यहाँ पे। You are getting, I'll speak to you later, I think later in the interest of the others. They'll get better. And then you 4.5 explain to it to 5 you. million करीब आरबीसी होता है। 4.1, हाँ. So, I can speak to you on that. So, everybody else is clear? Now, this is a centrifuge. I hope all of you have done centrifuges now. Because फिदाई नहीं हमारा, most उसको of कुछ the मत tests that you बोलना, are doing rapid नहीं तो आपके भी needs a कंबल serum. उड़ा के। Okay, and only the malaria one can be done with a fingerprint. That is actually, if you all have read the kitchen search, there will be a fingerprint which you all can do because it needs whole dry. So this is a centrifuge. Do you want to see the how the centrifuge works? I can run that. आप लोगों के यहाँ तो पहुँच गया है बॉस, हमने तो बहुत पहले खरीदी थी। पहले वालों का भी आप लोगों ने नहीं लिया था, हमने तो पहले वालों को ही रेमी दिलवा दिया, अब दिया होगा। हमने 1.5 साल पहले ही खरीद के रख दिया सारा। सबसे पहले हम ही लोगों ने दिया था। सेंट्रीफ्यूज का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, दे यूजेस दैट प्रिंसिपल। आपके पास एक ट्यूब है और आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालोगे, यू हैव टू बैलेंस दैट ट्यूब, नहीं तो क्या होगा, सेम सेम, अदरवाइज द होल दैट ट्यूब विल जस्ट बर्स्ट एंड द सैंपल विल कम आउट। अगर एक ही ट्यूब है, दूसरे ट्यूब में आप पानी डाल के उसको बैलेंस कर दो, इट्स जस्ट अ बैलेंसिंग एक्ट। अगर बैलेंस करोगे तो वो आपका सर्टिफिकेशन प्रॉपर होगा। एंड इसमें हम लोग यही है कि वी हैव अ स्पीड लिमिट एंड इसकी जो स्पीड होती है आईएसओ में, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कैलिब्रेट ऑल आवर इंस्ट्रूमेंट्स आर कैलिब्रेटेड टू द स्पीड। मैं अगर ये बोल दूं कि ये मेरा 3000 आरपीएम पे चलता है पर मिनट, who will prove it? There's a calibration instrument. It calibrates all your instruments. So all your mechanical instruments, like even a pipette, are calibrated. In our pathology lab, it's a must to have records every 6 months to calibrate. नहीं तो हो सकता है आज मैं 100 माइक्रोलीटर उसने ले रही हूँ, वो खराब हो गया और मैं बोल रही हूँ कि मैंने 100 माइक्रोलीटर पकड़ा, बट लेता वो 50 माइक्रोलीटर है, तो मेरा टेस्ट फिर से खराब हो। Okay, I'm giving erroneous results. So for that matter, all our instruments are calibrated. So when you look at pathology, it is very scientific and every step is calibrated. Like we say, we run controls, we calibrate instruments, we do PMs of the instruments, everything is calibrated. So that is, I think all of you, even if you're diabetic at home, you know how to do the lancet puncher. I need to do that? This is how you don't. What happens is in a lancet, जब आप hemoglobin test करते हैं, because you all are using Sally's method, don't press, because the moment you're pressing, your plasma is also coming and diluting the sample. So nice fine prick लो और droplet बनाओ, and droplet करके then you take the sample. अगर सैंपल आपने पंचर डीप नहीं किया है तो हम लोग की टेंडेंसी क्या होता है, दबाते हैं, तो वो प्लाज्मा जो उसकी साइड में है ना, फ्लूइड्स, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स, वो उसको आके आपके रिपोर्ट्स हेमोग्लोबिन की गलत हो जाती है। So all you need to do is a nice prick. So you know when your epidemic comes in. HBsAg is not epidemic. Yes, it is when you're screening your mother's and child, or the infected needle is being used somewhere else. That is the mode of infection for HBsAg. What if in case of hepatitis C? It's bloodborne. Bloodborne. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हेपेटाइटिस सी के भी है, पर आपकी गवर्नमेंट ने वो नहीं डाला है, हेपेटाइटिस सी नहीं डाला है, हेपेटाइटिस सी का भी है, बट हियर दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू डू दैट। आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस सी नहीं जाएगा। Then there is another thing now, urine. सबके पास यूरिन का है, you all can all read
उसकी बॉटल पे ना सारा कुछ है, उसको लो, बॉटल को लो, डिप किया, बॉटल के सामने रखो, पता चल जाएगा कौन सा क्या है। नाइट्रेट्स क्या होता है? नाइट्रेट्स इज देयर अगर उसके यूरिन में इन्फेक्शन है, ओके, अगर पस सेल्स है नाइट्रेट्स होंगी, सो इमीडिएटली सेंट्रीफ्यूज एंड सी यू विल सी पस सेल्स। बाकी आपको तो पता ही है, अगर यू कैन आल्सो सी बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट्स, उसमें पता चल गया जॉन्डिस है कि नहीं उसको। शुगर है, कीटोन, सपोज देयर इज अ डायबिटिक पेशेंट एंड ही इज इन कीटोसिस, at least the ketones are there, so urine can give you so much of information. And in case of uric acid, the blood is not a final parameter for uric acid testing. No. Urine is the final. No. Uric acid is blood. वो यूरिया है। यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आएंगे, देखो उसमें क्या आएगा, इट्स अ नॉर्मल क्रिस्टल। यूरिक एसिड आपके खाने में भी आप खाते हो ना, टमाटोज खाइए, यूरिक एसिड आ जाएगा। ये मुझे आया नहीं मालूम, बट आई विल टेल यू वन थिंग कि यूरिक एसिड जो है गाउट में उसमें ब्लड टेस्ट चाहिए। ब्लड टेस्टिंग एक आपका पैरामीटर नहीं है, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होना एक पैरामीटर नहीं है कि आपको पेन होगा यूरिक एसिड या गाउट का, ठीक है। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर तो आपका यूरिक एसिड का सडन फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है। नहीं, that's not my theory. See, the thing is, uric acid में generally in urine we see uric acid crystals. Yes. And that can happen by some of the food which you all would know better, where uric acid is present in those food. You taking high protein diets. High protein diets will also give you proteins in uric acid. So that is uric acid. Yes, high uric acid gives you gout. That is one of the reasons why. ये रहता है कि यूरिन से अगर बहुत ज्यादा निकल रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। यूरिक एसिड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। Yes, it is of protein. Yes, but anyway, I think that's not a relief rest to the rest of the team. So now you understood this. Now there is a 1+2+3+, especially in antenatal pregnant ladies. Please be careful because we are looking at them for preeclampsia. And सबसे पहले sign of preeclampsia in pregnant lady is protein in urine. Please monitor the urine. If the lady is coming with puffy face, puffy hands, puffy legs, urine protein क्या आपका आ गया? She is going into preeclampsia for a pregnant lady. If anemia is not the cause, ये नहीं कि पेशेंट एनेमिक है तो वो भी ऐसा हो जाता है कि हाइपोप्रोटीनीमिया एनीमिया में की स्वेलिंग आ जाती है। But if that is the case of a pregnant lady, especially in the third trimester, please look at urine proteins. And if she is going into preeclampsia, you should be worried about it. It is a warning time to worry about it. इसमें आपकी एल्ब्यूमिन आएगी, प्रोटीन हाई आ रही है, कम नहीं आ रही। देयर इज नो थिंग कि कम है, कम ब्लड टेस्ट से होगा। इसमें केवल हाई दिखेगा कि प्रेजेंट है कि नहीं। एमएयू आती है अलग टेस्ट है, माइक्रो एल्ब्यूमिन। अच्छा, वो रीनल क्या केस में होगा। So I got it now. इसमें अगर आपका से ग्लूकोज आ रहा है और कीटोन्स आ रहा है, ग्लूकोज 4+, 5+ आ रहा है, कीटोन्स आ रहा है, you know where the patient is heading. A diabetic patient is heading. Okay. So this is for urine. So this is, I think, one kit that all of you have, and it's a wonderful thing to have this thing because so many things you can diagnose with it. Hemoglobin estimation. This is finger prick. आपका ये भी नॉर्मली आप कर सकते हो इसमें। दिस इज अ डिजिटल ग्लूकोमीटर, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो ग्लूकोमीटर। I have both Salis hemoglobin meter and this digital one in my AyushHWC. Which one is better? डिजिटल इज ऑलवेज बेटर। जो चालीस में आपके ऊपर है वो डाइल्यूट करने के लिए, हाँ वो आपने सही डाइल्यूट नहीं किया, फिंगर प्रिक ठीक नहीं किया, तो वो जहाँ पे भी मैनुअल है वहाँ पे डाउट होगा। इफ यू आस्क मी कि दोनों में से कौन है, Which one is more accurate? टेस्ट करने वाले पे
डिजिटल जा रहा है, पर आपका सैंपल भी तो ठीक करो। डायलिस भी ठीक है आजकल, इज द मोस्ट लो कॉस्ट, सब जगह कर सकते हो आप, फील्ड में कर सकते हो, पर सही करो, उसका डाइल्यूशन सही करो। फिंगरप्रिंट ठीक से लो, ये नहीं कि स्क्वीज करके मैंने बहुत सारा डाइल्यूट कर दिया यहाँ, फिर मैंने उसको और डाइल्यूट कर दिया, आपका कलर मैच हो रहा है 5 ग्राम 4 ग्राम। What is the significance of MCH, MCHC, MCV, It's mean, it mean corpuscular hemoglobin concentration. Now the concentration of hemoglobin in a cell, in short, that is the thing. It's an indices which is like MCV होता है, volume पता था, MCHC volume का concentration. So आपका अगर hemoglobin कम है, तो इसका भी value कम है. क्लिनिकल आप उससे मत करो कि आपका पीसीबी और हेमोग्लोबिन एनीमिया के लिए बहुत, don't do with this MCHC because these are instrument instrument giving it out. आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास एक कैरियर मेथड है, आपके पास पीसीबी है, आपने सैंपल लिया और उसको आपने यहाँ रखा और आपने देखा कि आपका पीसीबी जो बन रहा है, पीसीबी मतलब जो क्लॉट बन रहा है ब्लड का, वो बहुत कम है, इमीडिएटली आपको दिख जाएगा कि आपका इसके पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है। एक ये भी एक वे ऑफ चेकिंग है। Madam, suppose we are looking for blood sugar random, and we go for the Lancet method, and one is going for phlebotomy and using another method, venous drainage. There one is arterial. But what do you think about it? Whether there arterial is much more reliable? Venous is much more reliable, but अभी हमारे पास क्या है फील्ड में? What do we have? We have a glucometer. ग्लूकोमीटर का एक चीज प्रॉब्लम है कि अगर आपने उसको कैलिब्रेट नहीं किया, फिंगरप्रिंट सही नहीं है आपका, और कैलिब्रेशन बहुत जरूरी, बट हम जनरली उसको बोलते हैं 10 to 20% का डिफरेंस आता है बिटवीन अ लैब एंड योर्स, इतना लेके चलो। हाँ, अगर 10 to 20%, अगर आपका से 100 है तो हो सकता है 120 था, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लाइक सपोज एक पेशेंट है, ही इज गॉट 300, आपका आ रहा, हो सकता है उसका ब्लड शुगर ज्यादा था, ही इज गोइंग इनटू कीटोसिस। Don't depend on this then immediately cross check, because that's a fine line before he goes into ketosis. एक आपके पास ये किट आती है वाटर टेस्टिंग की, आप लोगों के पास है? बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस टेस्ट बिफोर। आती है आप लोगों के पास? आती है। वेदर दिस वाटर कैन बी ड्रिंकेबल और नॉट। तो इसमें ये है कि आपको fill the water till this first line, fill the line and reseal the cap. Keep it for 24 hours. अगर black हो गया, not fit. If it is any other color, fit for drinking. I just saw this because ये हमने कभी करा नहीं था, because ये field में है। Biomedical waste segregation. In the beginning, I had mentioned to you that very important to segregate. We, especially during COVID, if you remember, we were told by the authorities, हमारी एनजीटी की हो जाती थी इंस्पेक्शन, कोई भी लैब में जाके देखते थे कि हमने प्रॉपर बिन रखा है कि नहीं, तो लैब सील हो जाती थी। They were so particular during especially COVID कि where you are putting your gloves, where are you disposing, are you autoclaving, do you have an autoclave, do you have an autoclave chart? So in our lab, we are very concerned about autoclaving, because what we are throwing out goes back into the society. I saw most of us, I think we don't have incinerators in most places where the sample is picked up, land filling हो रही है, but आप उसको decontaminate कर रहे हो, autoclave कर रहे हो, before you put it there. आप ये देखो बारिश आई, वो उसी पानी में से आपके घर में भी पानी आ रही है। So it is our moral duty to autoclave, waste disposal proper. It's moral duty as in society to ensure that people don't fall sick. आपकी नीडल है, नीडल आपने ऐसे ही फेंक दी, you haven't buried it, बंदर आके ले गया, हेपेटाइटिस का पेशेंट था, HIV का पेशेंट था, can you imagine what he is doing to that? कि बच्चे खेलते खेलते वो पकड़ लिया, HIV कहाँ से आया, एक कट आया, उसको पता ही नहीं था कहाँ से HIV आया। So what we have done is, if you don't sterilize,
We are also at risk, and our society is also at risk. And we are part of a society. So biomedical waste is very, very important what you do. Segregate, autoclave, hypochlorite डालो, cleaning your table. Please, आप लोग ही test कर रहे हो. What Dr. Pandey is telling me कि most of you all do the test. Make sure you wear your gloves. You go home to your children. You go and what we do, हम भूल जाते हैं हाथ धोने के लिए, we go hug our children. है ना, कोई आया, somebody comes, friend आ गया, उसको भी hug कर लिया हमने. क्या क्या infection फैला. वो है ना, so for us as society, as doctors, we should do this. Make sure waste segregation. I think that's my last of my lecture points. Any questions, please?